Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विषय रे पढिबा तो डेफिनेशन है देख जो आम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहूँ जेकोसी गोटे बॉडीर इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनामिक सिस्टम ओके सो फॉर एग्जांपल आम जदि दुई प्रकार मोशन एठी कंसीडर करिबा गोटे हला ट्रांसलेटरी आ गोटे हला रोटेटरी सो ट्रांसलेटरी मोशन जदि होउची गोटे पार्टिकल रो then it can take place in any direction and it can be resolved parallel to three axes जोटा कि तमरो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z एक्सिस जोटा अछि thus it requires three coordinates to define its position कोटा ट्रांसलेटरी मोशन okay hence it possess three degrees of freedom but however जदि आमे एबे गोटे रिजिड बॉडी कथा कहूछु a rigid body of finite size can also rotate so it has both translatory and rotatory motion okay now ये rotatory motion को हमें यदि देखिबा it can be resolved like translatory motion in three components about the three mutually perpendicular axes again the same x y z Cartesian coordinate axis through a point which is fixed in it okay so the state of motion of a rigid body can be thus described by 6 coordinates okay 3 hela tomoro translatory और 3 hela tomoro rotatory okay hence a rigid body has in general 6 degrees of freedom okay so ebe ame one by one देखिबा suppose एठी ame consider करिबा first monoatomic molecule then diatomic and then triatomic molecule एवं तारि पई degrees of freedom केते आसीबो सेटा calculate करिबा so monoatomic molecule first जदि देखुछु for example your helium हेगला किबा argon हेगला एमती गोटे सिंगल molecule आमे नै जिबा so it consists of one atom and its translatory motion or translational motion can take place in any direction in space so एठी फिगर रे एठी देखो सपोज हमरो एठी मॉलिक्यूल टा अछि एट ओरिजिन सो एनी डायरेक्शन रे यार ट्रांसलेटरी मोशन हेई पारे सपोज ताको हमें रिजॉल्व कला along the three coordinate axes x y and z axis okay tahale it requires three coordinates to define its position okay hence it has 3 degrees of translatory motion आ जदि एबे एई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रो जदि रोटेशन एक्चुअली देखिबा although it can also rotate but it has such a small moment of inertia so that its kinetic energy of rotation is insignificant so हमें याको neglect करि परिबा so it possesses only kinetic energy due to the translation and therefore monoatomic molecule रो जदि हमें degree of freedom कहिबा it has 3 degrees of freedom due to the translatory motion okay एबे देखिबा सेकंड केस रे diatomic molecule देखो एटी नारू जना पड़ुची जे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैला इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ए डायएटॉमिक गैस like H2 by hydrogen O2 by oxygen etc so it consists of two atoms which are joined rigidly with each other through a bond as shown in figure एटी फर्स्ट फिगर रे देखो एटी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एटा हैला दुईटा एटम which are joined rigidly so एठी जदि एई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल रा हमें जदि मूवमेंट बा मोशन को देखिबा actually it cannot only move bodily but also it can rotate about any one of the three coordinate axes जो एठी हमें देखि परछु
x y और z axis अछि about these three axes it can also rotate but however एठी देखो मार्क करो दुई एटम टा linearly about x axis अछि तो जदियो भी रोटेट कला ये about x axis फिर भी एठी moment of inertia जेतकी बाहरिबो that will be very negligible as compared to the rotation which is taking place about the y and z axis so ताकू आमे एई x axis रो थिबा रोटेशन को आमे नेग्लेक्ट करि परिबा सो ऑल इन ऑल आमरो एठी दुईटा डिग्री ऑफ फ्रीडम आसीबो ड्यू टू रोटेशन गोटे हला अबाउट y axis आ गोटे हला अबाउट z axis ता सहित पूर्वरु आमे जानिचु जे ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन तीनटा डिग्री ऑफ फ्रीडम आसे सो टोटल हे गला गोटे डायटोमिक मॉलिक्यूल पोजेस करछि 5 नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम out of which 3 are translatory motion ଆଉ 2 ହେଲା तमरा due to rotational motion ओके एबे देखिबा नेक्स्ट योर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल तबे ता पूर्व हां गोटे कथा सपोज आमे एबे जदी हाई टेम्परेचर केस कंसीडर करूछु ताले इन एडिशन टू द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एठी तमरा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मध्ये आसीबो सो दैट vibration केमती हेबे बिकॉज हाई टेम्परेचर एटम्स गुडा एक्साइट होंती so in that case the diatomic molecule may possess 7 degrees of freedom in all okay से जाबियो एबे आमे देखिबा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल रो एग्जांपल हला तमरो जेमती कि H2O बा वाटर देन CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल रे it can rotate about any of the three coordinate axes जेमती आमे ऊपर देखुतला एबे किंतु आ यार रेस्ट्रिक्शन टा टिके आ बेसी रहिबो नाही जेमती कि डायटोमिक मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्शन थिला तो एठी आमे जनरली डायटोमिक मॉलिक्यूल पई it possess 6 degrees of freedom out of which 3 are due to translatory motion and other 3 are due to the rotational motion so if the atoms again vibrate with respect to each other जोटा कि हमें high temperature case यदि consider करिबा then it would possess more number of degrees of freedom with respect to the vibration also ताले एठी आ गोटे स्पेशल केस हमें देखि परिबा ए जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल रो देखो जदि हमें ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल टाको नीचु एज ए नॉन लिनियर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल H2S SO2 सो एठी एई बलिया नॉन लिनियर तीनटा जाको मॉलिक्यूल गोटे लाइन रे रहिबे नि ता माने ओके सो नॉन लिनियर केस रे obviously it will have 6 degrees of freedom out of which 3 translational and 3 rotational okay so this is the case of non linear triatomic molecule अच्छा सेकंड केस रे जदि हमें भाबिबा जे ई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल टा एबे लिनियर हिसाब रे अछि तार पोजीशन लाइक दैट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड हे गला CH2 हे गला सो एठी कोन हेबो एठी जेतु गोटे स्ट्रेट लाइन रे तीनटा जाको मॉलिक्यूल रही गले ताले जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ योर डायटोमिक मॉलिक्यूल सेठी जेमती होतला एबे तीनटा ट्रांसलेटरी मोशन रहिबो आ केवल दुईटा ही रोटेशनल मोशन हे परिबो बिकॉज सपोज एठी अलोंग x एक्सिस एटा लिनियर हे कि गोटे लाइन रे रहिले ताले अबाउट दिस x एक्सिस जो रोटेशन टा हेबो ड्यू टू दैट the moment of inertia जोटा बाहरिबो that will be very negligible आमे केवल ए z axis आउ y axis रो रोटेशन को ही कंसीडर करि परिबा so in case of linear triatomic molecule it has 5 degrees of freedom okay 5 degrees of freedom so आ गोटे कथा again जो आमे high temperature कथा देखुतला in addition to the translatory and rotational motion the molecule can also possess vibratory motion giving rise to the vibratory degrees of freedom or vibrational degrees of freedom which is occurring particularly at high temperature okay asesore as per the law of equipartition of energy jodi ame dekhiba for a classical dynamic system of particles which are in equilibrium at some absolute temperature T tale average internal energy per particle which is associated with each degree of freedom तार value टा हेबो half kT okay एठी k हे गला Boltzmann constant so if a particle has n numbers of degrees of freedom then it will have average energy equal to half n kT so ये जो law of equipartition of energy विषय रे हमें next class रे पढ़िबा।